Hi friends, in this session we'll start with most important question, that is zero order reaction. Zero order and first order derivation is really very important for your examination is concerned. So today we'll start with a zero order reaction. Now hope you are aware about it, what actually means by order of reaction, what actually means by molecularity, what actually means by rate of reaction, how the rate of reaction is denoted. Everything आप लोगों ने previous session अच्छे से check कर लिए होंगे. So without wasting much time, let's start zero order reaction. So reaction start with R gives P, means a hypothetical equation, that is reactant is converted into product, that is R gives P. Now what is rate? Rate is nothing but minus dr upon dt is equal to k r raised to 0. Here in case r raised to 0. Why r raised to 0? Just because it is a zero order reaction. So r raised to 0. So rate is equal to minus dr upon dt. Second question, why sir minus sign? Just because in introductory part we'll discuss reactant concentration continuously decreases, opposite to that product concentration continuously increases. So here in case minus dr upon dt is equal to k into 1. Now anything raised to 0 is equal to 1. So that's why here in case we have a r raised to 0. That's why it's a 1. Now rearrange this term को थोड़ा सा rearrange कर लेते हैं. This goes to opposite direction. So we have dr, minus sign भी सामने दे दिया. That's why it's a minus k, and dt goes to opposite direction. We have dt. So now we have equation dr is equal to minus k dt. So minus sign यहाँ से सामने चला गया, dt डिनोमिनेटर सामने न्यूमरेटर में चला गया. Now this equation is ready for integration. Now integrating both the side. So integrating both the side, दोनों तरफ integration कीजिए. So now derivation, integration cancel out. What is left in this side? R is equal to minus kt plus I. I is nothing but integration constant. Generally आप maths में C लिखते हो, C is integration constant. Here in case we'll put it as I is nothing but the integration constant. Once again above equation integration कीजिए, integrate this above equation both the sides. So this is R, this is minus kt plus I is nothing but integration constant. Now how can we get the value of I की वैल्यू कैसे मिलेगी? So मैथ्स में भी आप ये स्टेप करते हैं, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम स्टेप है. So when t is equal to 0, r is equal to r0. Once again, when t is equal to 0, r is equal to r0. So in above equation means this, instead of r can I write r0 minus k as it is, instead of t 0 plus I. Anything multiplied by 0 means 0. So r0 is equal to I, means integration constant की वैल्यू यहाँ पे मिल गई हमें, that is r0. Once again, how can we get the integration constant when t is equal to 0, r is equal to r0, where r0 is nothing but the initial concentration. So r0 is equal to minus k as it is, t की जगह पे 0, I, so I की वैल्यू हो जाएगी r0. Now put this value I in above equation number 1. Equation number 1 integration constant की जगह पे अब मैं क्या लिख सकता हूँ? r0. So put this value in above equation. तो above equation क्या हो जाएगा? R minus kt plus r0. R as it is, minus kt as it is. Instead of I can I write r0. Now make a form of k. K को equation का form बना लीजिए. तो what you get? You get r0 minus r divided by t. This is nothing but zero order reaction. If somebody asks what is the example of zero order reaction, the best example, production of ammonia in the presence of platinum. So as for example, 2 mole of ammonia, 1130 Kelvin temperature in the presence of platinum as a catalyst, we get N2 plus 3H2. So rate is nothing but K into NH3 raised to 0 is equal to K only. Why 0? Just because it is zero order reaction which is independent to this reactant concentration. ग्राफ ड्रॉ करना कंपल्सरी है. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R वर्सेस T का ग्राफ है. दिस इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R0, K is nothing but the minus slope. So slope is nothing but minus K. So you get your
आंसर ओवर हियर. सो बाय ग्राफिकल मेथड भी आप फाइंड आउट कर सकते हो. तो दिस इज ऑल अबाउट योर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. अब नाउअडेज इसी के साथ साथ आप लोगों को T1/2 भी पूछ लेते हैं. सो T1/2 का मतलब हाफ लाइफ पीरियड. द कॉन्सेंट्रेशन reaches to this original to half, time required is known as half life period. मान लीजिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 10 मोल. टू कन्वर्ट 10 मोल टू 5 मोल, टाइम रिक्वायर्ड इज नोन एज T1/2, हाफ लाइफ पीरियड. बट उससे पहले सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर का भी डेरिवेशन चेक कर लेंगे, फिर दोनों का T1/2 एक साथ चेक करेंगे. सो यहाँ पे हमारा जीरो ऑर्डर डन हो चुका है. जीरो ऑर्डर का फाइनल इक्वेशन है K इज इक्वल टू R0 माइनस R अपॉन T. दैट इज अवर जीरो ऑर्डर इक्वेशन. नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन टू दिस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. So if you are through with zero order reaction, first order reaction is pretty easy, almost same है. अगर जीरो ऑर्डर अच्छे से चेक कर लिया है तो फर्स्ट ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं आएगी. So let's start with the first order reaction where R gives P. Now rate is equal to minus dr upon dt is equal to K R raised to 1. Why 1? Just because it's a first order reaction, so that's why R raised to 1. So rearranging this term, rearrange करेंगे तो dr अपॉन r इज इक्वल टू माइनस के dt. क्या किया, ये माइनस साइन सामने दे दिया. r गोज टू डिनोमिनेटर, dt गोज टू द न्यूमरेटर. सो व्हाट वी हैव dr अपॉन r इज इक्वल टू माइनस के dt. Now above equation is ready for integration. Integrate this above equation. What we have ln r is equal to minus kt plus I. I is nothing but integration constant. Now once again, how can we get the integration constant value? When t is equal to 0, r is equal to r0. So now in above equation wherever you have t की जगह पे 0 लिख लीजिए और r की जगह पे r0 लिख लीजिए. So we have this equation ln r is equal to minus kt plus I is nothing but integration constant. उसकी वैल्यू कैसे मिलेगी? उसकी वैल्यू मिलेगी when t is equal to 0, r is equal to r0, where r0 is nothing but initial concentration. So instead of r can I write ln r0 minus k as it is, t की जगह पे 0, I as it is. So anything multiplied by 0, 0 हो गया. I की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? ln r0. So now next step, instead of I can I write ln r0, put this value of I, that is ln r0, in equation number 2. So I की वैल्यू उठा के ऊपर के इक्वेशन में रख दीजिए. Substitute this value I in above equation. What we have, ln r is equal to minus kt plus ln r0. I की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ln r0. Now ln term one side, ln r upon r0 is equal to minus kt. So what we have k is equal to 1 upon t ln r0 upon r. Now still we have a ln, तो ln को log में कन्वर्ट करना पड़ेगा, means 2.303. So what is our final equation? Our final equation is k is equal to 1 upon t की जगह पे 1 upon t, ln की जगह पे 2.303 log of r0 upon r. परफेक्ट, डन, श्योर. यहाँ पे शायद आपको कंफ्यूजन होगा, सर माइनस के टी ln r upon r0 कैसे? सी समझिए, यहाँ पे क्या है? माइनस के टी. माइनस साइन सामने दे दीजिए तो क्या हो जाएगा? r0 upon r, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा. सो नाउ मेक ए फॉर्म ऑफ k. तो k इज 1 upon t ln r0 upon r. होप इट इज क्लियर. नाउ यहाँ पे ln है, ln को log में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई. सो k इज इक्वल टू 2.303 बाई t log ऑफ r0 upon r. बेस्ट एग्जाम्पल, C2H4 plus H2 gives C2H6, where rate is nothing but k into C2H4. मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्राफ ड्रॉ करने पड़ेंगे वरना मार्क्स कट हो जाएंगे. सो नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द ग्राफ. सो सबसे पहला ग्राफ है ln r वर्सेस t टाइम का. This is nothing but initial concentration ln r0, and once again same k is equal to minus slope, so k is equal to minus k. Second graph, log of r0 upon r versus t. गुड सेट में पूछा हुआ क्वेश्चन, what is the value of slope in this equation?
सो स्लोप की वैल्यू होगी k अपॉन 2.303. What is the value of slope in this graph? Means when you plot a first order graph ln r versus t, what is the value of slope? Second question, what is the value of log r0 upon r versus t in first order reaction? Slope की value हो जाएगी k upon 2.303. So this is all about your graphical representation. सो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन डेरिवेटिव कर लिया. दिस इज द एंड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. इसके बेस के ऊपर न्यूमेरिकल मिलेंगे k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ r0 अपॉन r. यही फॉर्मूला से न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने हैं. नाउ वी मूव ऑन टू दिस हाफ लाइफ पीरियड. t1/2 के बारे में डिस्कशन करते हैं. सेम जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए. Once again, what do you mean by half life period? Half life period means time required to reach initial concentration to its half. Means initial concentration से half concentration तक time required या फिर time जो लगेगा उसको बोलेंगे half life period. तो यही जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए अप्लाई करना है. सो जीरो ऑर्डर का इक्वेशन क्या था? k इज इक्वल टू r0 माइनस r अपॉन टी. That is our zero order reaction. So wherever we have t की जगह पे t1/2, तो कंडीशन क्या हो जाएगी? r की जगह पे half of r0, while r0 is nothing but the initial concentration. तो जहां जहां r है वहां half of r0 लिखना है, जहां जहां t है वहां पे t1/2. So now equation 1 जो है वो चेंज हो जाएगा. k as it is r0 minus half of r0 divided by t1/2. So t1/2 is nothing but r0 divided by 2k. अब k दिया होगा t1/2 ढूंढिए, t1/2 दिया होगा k ढूंढिए. दैट इज आवर हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. अब स्कूल एग्जामिनेशन में दोनों कंबाइन करके पूछ सकते हैं. डिराइव एन जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड डिस्कस इट्स t1/2 ऑल्सो. तो आपको जीरो ऑर्डर पूरा डिराइव करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है और एंड में जीरो ऑर्डर के लिए t1/2 भी लिखना है. Likewise, derive an first order chemical reaction and discuss its t1/2. So now we'll discuss t1/2 for first order reaction. So for a first order reaction, first order का end क्या था? k is equal to 2.303 by t log of r0 upon r. जहां जहां t वहां वहां t1/2, जहां जहां r वहां वहां half of r0. So k is equal to 2.303 by t1/2 log of r0 upon r0 by 2. So k is equal to 2.303 divided by t1/2 log of r0 divided by r0 by 2. So t1/2 is equal to 2.303 by k log 2. Denominator becomes numerator. r0 cancel out. log 2 की वैल्यू मीन्स log 20 क्या होगा? 0.3010. So put log 2 value, that is t1/2 is equal to 2.303 by k multiply by 0.3010. So what we have final? t1/2 is equal to 0.693 by k. k दिया होगा, आप t1/2 ढूंढ सकते हो. t1/2 दिया होगा, आप k ढूंढ सकते हो by this equation. This formula is really very useful for your end exercise and short example is concerned. So here we end with most important session. Derive an equation for zero order reaction and discuss its t1/2. Second question, derive an first order equation with its t1/2. So this is all about your today's session. Thank you.